Hello, IIM aspirants. Welcome to Supergrads. I'm sure that your preparation for your both come IPMAT Indore is in full swing and you're putting your best foot forward to ace both or either of the papers that you're planning to write. Well, today in this session, we will understand how to build your IPM profile. So stick till the end because there will be a lot of good and valuable, useful information that will be shared in this video. So let's first of all understand key building your IPM profile. What does it mean to build your IPM profile? Um, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जो आपका IIM में सिलेक्शन का प्रोसेस है वो लेयर्स में होता है, वो कुछ लेवल्स पे होता है। तो फर्स्ट लेवल है जहाँ पर आप एक रिटन टेस्ट देते हैं और आप उसे उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, देन आप एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट राउंड दैट इज PI के लिए। नाउ बिटवीन क्लियरिंग द रिटन टेस्ट एंड अपियरिंग इन द PI एक छोटा सा राउंड और होता है वेयर यू विल बी आस्क्ड टू बिल्ड योर प्रोफाइल। सो यू विल गेट 2 questions जहाँ पर आपको 2 सवालों का जवाब देना होगा एंड द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग you will be asked to state any of your achievements. Now let's understand the relevance, the significance, the importance of this round. So उन्होंने आप अकेडमिकली कितने इंक्लाइंड हो, आप अकेडमिकली कितने स्मार्ट हो, टेस्ट कर लिया रिटन टेस्ट के थ्रू। तो आपका अकेडमिक्स कितना स्ट्रांग है, आप कितने लॉजिकली, आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, आपकी वो कैप कितनी स्ट्रांग है, RC कितने स्ट्रांग है, ये सब तो टेस्ट हो गया फर्स्ट राउंड में। Now here, when they ask you to build your profile, they want to see कि जिस स्टूडेंट को वो अपने कॉलेज में लेना चाहेंगे, वो एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सो सी, लुक एट द क्वेश्चन, स्टेट एनी अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर यू विल बी आस्क्ड टू राइट जो भी आपने एकेडमिक्स के एम्बिट के बाहर जो कुछ भी आपने किया है वो सब आपको यहाँ पे स्टेट करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स डिवाइड दिस इन सेक्शंस। तो अगर हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं को करिकुलर में और उसके लिए हमारे पास कुछ अच्छे सर्टिफिकेट्स भी हैं, सो गो हेड, मेंशन ऑल ऑफ देम हियर इन दिस सेक्शन। एंड नाउ व्हाट पॉसिबली कैन गो इन दिस सेक्शन जिसके लिए सर्टिफिकेशन हो। मे बी आपने कुछ अच्छे कोर्सेज किए हैं, you can write about जिसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट है, you can write about those. Maybe you participated in an event, maybe you organized an event, maybe you participated in Olympiads, maybe you participated in anything जिसके लिए आपको कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिला था. So you can write about all of those here uh, in this section. Now let's talk about the other side of the story. Maybe आपने participate तो किया है बहुत सारी चीज़ों में, but you do not really have a certificate for that. मे बी आपने किसी गरीब बच्चे को कोच किया, आपने उसकी पढ़ाई में हेल्प करी, मे बी आपकी कोई आपने किसी भी ऐसी चीज़ में पार्ट लिया जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, अप्रिसिएशन मिला बट सर्टिफिकेट नहीं मिला। इट्स ओके टू इंक्लूड दोज एक्टिविटीज हियर टू, but then make sure that you're able to justify whatever you've stated here as an achievement. Now, the third side to the story can be आपका सिर्फ academics पे interest है और आपने कोई भी ऐसा co-curricular activity में part नहीं लिया जिसे आप यहाँ पर mention कर सको. So let's understand इस केस में हम क्या कर सकते हैं. Now see, there are 2 things that we can do. One, we still have approximately 4.5 months left before the actual paper. So if लेट्स से यू हैव टाइम, आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा डिस्टर्ब करे बिना या बिना डिस्टर्ब करे आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी NGO को ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई हॉबी इनकलकेट कर सकते हो। तो गो हेड, स्टार्ट कर लो, एनरोल स्टार्ट कर लो, सो दैट यू आर एबल टू राइट समथिंग हियर एज एन अचीवमेंट। सो मे बी व्हेन इट कम्स टू, स्पेशली इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, तब तो ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन के साथ दिन का थोड़ा सा समय निकाल लें अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी पर्सनालिटी को और बेटर करने के लिए. Now see, there can be certain good courses that you could join. Maybe some digital marketing के courses हैं या content writing के courses हैं या फिर general management के courses हैं. Maybe you can create your own Instagram page, curate something good, create something good. If you have a decent fan following, now this is ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, मगर जो भी हो वो ऑथेंटिक हो, वो जेन्युइन हो, बिकॉज इफ इट ऑल यू मेंशन दिस हियर, दे कैन एक्चुअली ओपन दैट
during the interview, go to your page and see whatever you stated or whatever you're saying is true or not. So जो भी हम लिखते हैं वो ऑथेंटिक होना, वो जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आपने लिखा मेरी हॉबी तो बास्केटबॉल है, सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको, सो नोइंग नॉट जस्ट द रूल्स ऑफ द गेम और हाउ द गेम इज प्लेड और हाउ गुड यू आर इन द गेम, मे बी थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज हो, थोड़ी सी रिसर्च हमने कर रखी हो, मे बी समथिंग लाइक द बेस्ट टीम्स अराउंड द वर्ल्ड, मे बी द बेस्ट प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड। सो अंडरस्टैंड जो भी आप वहाँ पर लिखते हो एज अ हॉबी और एज एन इंटरेस्ट, उसके बारे में आपको नॉलेज हो ताकि उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उसे बहुत अच्छा हैंडल कर सको, आप उसको पूरे कन्विक्शन के साथ आंसर कर सको। तो this is what this section will be about. So state your achievements for which you have certification. In case you do not have certification, you can still go ahead and mention those achievements, but make sure that you're able to justify. जो भी आप वहाँ पर लिखें उसे आप उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च करी हुई होनी चाहिए, जो भी लिखा हो वो सही होना चाहिए। Misrepresentation can cause a very difficult situation in front of the interviewer. आप कुछ भी ऐसा लिख दें जो आपने शायद नहीं किया है, लेकिन आप लिख रहे हैं, and the interviewer, if he cross questions you and you're not able to justify, if you're not able to validate what you have written, imagine कीजिए थोड़ा सा difficult situation हो जाएगा interviewer के सामने। तो let's be candid, let's be honest, and let's write whatever we have actually done. So that was about the first section जहाँ पर you will be asked to state your achievements. Just understand, जैसे आपके academics का, आपके written exam का या आपके PI का weightage है, this will not have that kind of impact. Only the interviewer will develop or uh, ask you questions around whatever you've written. So they would want to see कि academics के अलावा आप क्या चीज़ अच्छा कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, आपका इंक्लिनेशन कहाँ पर है. So that will be the first section of the first question that you will be asked. The other question will be your career plan. Now just imagine, uh, this course offers you a 5 year integrated program, right? So the first 3 years, you will be trained on all the compulsory subjects. Fourth year, you choose your major or you choose your major subject rather. So the career plan simply means where do you see yourself in 5 years. तो अभी से क्या आपको क्लैरिटी है कि जब आप फोर्थ ईयर में होंगे आप किस चीज में मेजर करना चाहेंगे, क्या आपका स्पेशलाइजेशन होगा? लेट्स से आपने सोचा मुझे तो मार्केटिंग में जाना है, तो मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट हियर एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट एन essay up to approximately 500 words. तो यू विल वेरी क्लियरली स्टेट कि आपका विजन अपने लिए क्या है, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखोगे, आपका मेजर क्या होगा, उससे आपको करियर पाथ में कैसे डेवलपमेंट आपका होगा, आप अपने आप को कैसे पुश कर पाओगे आगे, एंड हाउ विल यू ग्रो in your career. So when you will write about this, maybe you can, see that I'll choose marketing as my major subject or my specialization. So maybe I see myself as a marketing entrepreneur. I'll run my own business, or maybe I see myself as a marketing manager. Maybe I'll join some MNC. So whatever it is that you have a clear vision about where you see yourself. What's your plan for yourself? Where would you want to be in 5 years' time? Have clarity, have a vision, and then structure this essay. So that's all about building your IPM profile. So a tip from my side: be candid, be discreet, be honest, do good research, and be very prudent. All the best.